Good morning, everyone, and welcome to the class. We will now do the revision of the previous chapters, and we will start with geography. The first chapter, resources, as you have done this chapter, and you know what is resources. Resources are something which have some utility and something which can satisfy the need of human being is called resource. So what is important in order to be a resource, anything must have some utility, it must have some usability, and then only it can become a resource. Otherwise it will not be a resource if it has no utility for us, or it is not it is of no use, then it will not be a resource. Okay. And the second thing which we find important, or which is very much required in order to be a resource, is value. Anything must have some value, and then only anything become a resource. Yeah, utility plus value, both the things must be there. जब utility होगी तो उसकी value भी होगी. It's very natural. Anything which has any use, then it must be having some or the other value. If the thing is not usable, or if the thing has no utility, then it will have no value also, है ना? So this is what is important. In order to be a resource, the thing must have some utility and it must have some value. Okay. But now we see that when we talk of value, it does not always means economic value. And there are some things which is not having any economic value. Still, they are very useful for us. Still, it is a resource for us, like beautiful landscape. You know, beautiful landscape has no economic value, but it give us a kind of satisfaction. इसके पास एस्थेटिक वैल्यू है. ये हमें हमारे जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स का जो एस्थेटिक नीड्स है, उसको वो फुलफिल करता है. सो द ब्यूटीफुल लैंडस्केप इज ऑल्सो अ रिसोर्स, दो इट इज नॉट हैविंग एनी इकोनॉमिक वैल्यू, है ना? And one more thing is there, like there are some resources which can become economically valuable with time. Like अभी वो हमारे लिए economically valuable नहीं है. It has utility, but it has no economic value at present. But with the passage of time, it may become economically valuable. Like example, grandmother's home remedy. है ना? आपकी ग्रैंड मदर ने जो होम रेमेडीज बताए हैं, लाइक आपके स्टमक में एक होता है, या किसी भी तरह की कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जो होम रेमेडीज होती हैं, उसकी हो सकता है कि आज के डेट में कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, है ना? बट सपोज आपने उसको पेटेंट करा दिया, है ना, और अब वो उसका उसकी सेलिंग होने लगी किसी मेडिकल फॉर्म्स के थ्रू, तो क्या हो जाएगा? नाउ दैट होम रेमेडी विल हैव इकोनॉमिक वैल्यू, है ना? तो अब जो ये इस तरह से कोई चीज़ की, मतलब एट प्रेजेंट इट मे नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, बट इन फ्यूचर इट मे बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, है ना? So this is important to understand. And now we see there are two factors which can change any substance into resources. These two factors are time and technology. Time and technology are two important factors that can change substances into resources. है ना? And both time and technology, they both are related to the needs of the people. And one more thing is there, people themselves are the most important resources. We, the human being, we are also resources. है ना? We have ideas, we have knowledge, we do inventions, we do discoveries, and all these lead to the creation of more resources, है ना? हमारे आइडियाज़ के थ्रू, हमारे नॉलेज के थ्रू, हमारे जो भी हम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज करते हैं, उससे क्या होता है? और भी ज़्यादा रिसोर्सेज बनते हैं,
है ना। और एक एक कुछ भी जो डिस्कवरी होती है उससे और भी कई सारी चीजें बननी शुरू हो जाती है। लाइक डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की जब डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ, इट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। फायर के बारे में जब लोगों को पता चला तो उससे क्या हुआ, कुकिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस कि कुक्ड फूड हमें मिलने लगा, है ना। और फिर अदर प्रोसेसेस भी इसके साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें व्हील का इन्वेंशन, जब व्हील का इन्वेंशन होता है तो उससे क्या होता है कि न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का फिर डेवलपमेंट होने लगता है। सो टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारी नई चीज़ों को बना सकते हैं, है ना। इसी तरह से जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे के को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की टेक्नोलॉजी जब आई तो उससे क्या हुआ कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर था उससे एनर्जी जनरेट होने लगी और फिर इससे और भी बहुत सारी चीज़ों का जनरेशन हुआ। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज कि uh, एक चीज़ जो बनती है, एक चीज़ जो इन्वेंट होती है या डिस्कवर होती है उससे फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ना। अब नाउ वी विल सी what are the types of resources. There are actually three types of resources: natural resources, then human made resources, and the human resources. Okay, so natural resources क्या होता है, what do you mean by natural resources? So, first of all, we will see about natural resources. Natural resources are those resources which are drawn from nature and we use it without much modification. बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी changes लाए बिना ही हम उसको use करते हैं. This is called natural resources. है ना, like the air which we breathe is a natural resource जिसमें हम कोई भी modification नहीं करते हैं in normally. अब अगर बहुत ज़्यादा polluted air हो जाए तो that is another thing, but normally we don't do any kind of modification in air. Likewise water जो होता है उसको भी हम use करते हैं, बट अगर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उससे भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बट अदरवाइज इन जनरल वी यूज इट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। देन सॉइल्स है, मिनरल्स है, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एंड वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज डायरेक्टली। इसमें हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि लाइक मिनरल्स हैं। मिनरल्स को इन ऑर्डर टू डिग आउट द मिनरल्स वी नीड सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, है ना। बट एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनके लिए हमें किसी टेक्नोलॉजी या टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, एंड नाउ वी विल सी दैट द नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली, जो जिनका रिन्यूअल होता रहता है एकदम। हम इधर यूज कर रहे हैं, उधर वो रिन्यू हो रहा है ना। So this process is going on. It is getting replenished or renewed quickly. So there are some natural resources which are unlimited, no limit to these natural resources, and they are not affected by human activities, like solar energy, wind energy. These are totally अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। बट वहीं पर अगर हम एयर और वाटर को देखें तो दे आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब जो है इन पर असर पड़ता है अगर हम इनको सही ढंग से यूज ना करें तो, है ना। द केयरलेस यूज causes pollution in water, air. So, this renewable energy can also be of two types, है ना। एक ऐसा जिसको ह्यूमन एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। दूसरा ऐसा जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज से फर्क पड़ता है ना, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। ओके, and now we will see there are some non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources which have a limited stock. इनका stock limited है, आप उसको use कर रहे हैं
जैसे जैसे आप यूज कर रहे हैं जो उसका स्टॉक है वो कम होता जा रहा है. And one more thing is here, the process of renewal or replenishment is going on in the non-renewable resources also. ऐसा नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो बस एक बार बन गया तो वो उसके बाद दोबारा नहीं बनता है. बनने का प्रोसेस उसका भी चलता रहता है. बट हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज वेरी स्लो. बहुत ही स्लो रेट से वो बनता है. जबकि यूज जो हम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट से हम यूज़ करते हैं. तो जिस रेट से हम यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रेट से उसको उससे बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा कम रेट से वो बनता है. और इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. रिन्यू हो रहा होता है बट जिस रेट से हम उसको यूज़ कर रहे थे उस रेट से वो नहीं बन रहा होता है. और ये इतना लंबा पीरियड होता है. दिस इज सच अ लॉन्ग पीरियड. एक्चुअली वी कैन से कि दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, है ना. इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. इनके जो रिन्यूअल का जो टाइम है वो ह्यूमन लाइफ स्पैन जो होती है उससे भी ज़्यादा है. एंड दिस इज द रीजन दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल. इसमें कौन से आपके एग्जाम्पल्स हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर some of the examples of non-renewable resources. The distribution of natural resources depend upon so many factors, physical factors, geographical factors like terrain, climate, altitude, है ना. ये सब पर डिपेंड करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. इट इज़ नॉट इवन. एंड ऑन द वर्ल्ड we find that the distribution of natural resources is not even. It is different. It is highly uneven because of these geographical factors. Okay, and now we will see about the human-made resources. Okay, human-made resources are those resources which are made by human being, है ना. And these human-made resources uh, are very important because ह्यूमन अपने लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बनाता है है ना. और हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्स तभी बनते हैं जबकि उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है. लाइक आयरन ओर वाज अवेलेबल ऑन द अर्थ बट पीपल वर नॉट नोइंग द टेक्नोलॉजी, the technique how to turn this iron ore into iron. So that iron ore was not a resource for us. It was simply a substance which was of no use for us. When the human got this technique, how to convert or how to change the iron ore into iron, then that iron ore became important for us. That iron ore became useful for us. है ना? So then it become a resource. Got it? So this is the thing. Why human knowledge of human is very much important. Whatever knowledge we have, using that knowledge, such technologies are created, and these technologies changes the substance into resources. Okay, so these are called human made resources. Technology is also a human made resource. Technology जो है वो क्या है? एक human made resource है. Okay, now human resources क्या होता है? Human resources just like you and me, the people, we are the human resources. जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो हमारी टेक्नोलॉजी कुछ करने की है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. उसके कारण हम रिसोर्स बनते हैं क्योंकि उसके कारण हम यूजफुल बनते हैं. अगर हमारा कोई यूज ना हो, हमारे पास कोई स्किल ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई टेक्नोलॉजी ना हो, देन वी विल ऑल्सो बी ऑफ नो यूज. तब हम रिसोर्स नहीं बन पाएंगे. In order to become a human resource, what is required? A human must have some knowledge, must have some skill, must have some understanding of technology, है ना. उसको कुछ उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए ना, तभी वो रिसोर्स बनता है.
सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। और हमारी जो क्वालिटी है, लोगों की जो क्वालिटी है, हाउ दिस क्वालिटी विल इम्प्रूव? दिस क्वालिटी विल इम्प्रूव ओनली थ्रू टू मीन्स। द फर्स्ट इज एजुकेशन एंड द सेकेंड इज हेल्थ। जब हमें प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा और हमारा हेल्थ केयर होगा प्रॉपर, तभी हम एक अच्छे रिसोर्स बन पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, what is important that a person must get proper education and proper health services, and then that person becomes a human resource. And this process, the process of improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources, is known as human resource development, HRD। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके स्किल, उनके नॉलेज को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि वो और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, नाउ वी विल सी कंजर्विंग रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्विंग रिसोर्सेज? हमने रिसोर्सेज के तीनों जो क्लासिफिकेशन था वो देख लिया, एंड नाउ वी आर अबाउट द कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। Resource conservation is very much important because resources are very much vital for us. We cannot survive without resources, and these resources are many of them are non-renewable. If they are renewable, still we need to use them in such a manner that they should not be polluted, है ना? सो वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज जो भी हैं उसको केयरफुली हमें यूज़ करना होगा, एंड उनको इतना टाइम देना होगा ताकि वो रिप्लेनिश हो सके, है ना? जैसे हमने देखा ना, जो नॉन रिन्यूएबल है रिप्लेनिश होता है, बट इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ठीक है, हम उतना टाइम तो नहीं दे सकेंगे, बट स्टिल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और उसको टाइम दें ताकि वो रिन्यू हो सके। ठीक है, एंड वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे। सस्टेन करे मतलब ये नहीं कि बस अभी के जो जनरेशन है उनके ही नीड्स को हम ध्यान में रखें, उनके ही नीड्स को हम पूरा करें, और जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन है उनके नीड्स पर हम बिल्कुल भी ध्यान न दें। बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हो रहता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन करे, जो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए ना हो बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जो सोचता हो, ऐसे डेवलपमेंट्स करिए, है ना? सारे रिसोर्सेज को अगर आप यूज करके खत्म कर देंगे, देन व्हाट will what will be left for the future generation? So we must conserve them for the future. This is called sustainable development. Okay, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Okay, and now there are so many ways through which you can save resources. You can use the resources in a very reasonable manner. Like you should never waste water. Wherever you see that the tap is open, you can close it. है ना? You should not left the tap open. Then if you are not in the room, then you must switch off the light, you must switch off the fan, है ना? If you are not watching the television, then you must switch it off. So these are the very simple and small steps which can do a very big change, which can bring a very big change if we all become aware, है ना? So that is the need कि we all must become aware. We all must do something for our mother nature, because when you are doing for your mother nature, actually you are doing for yourself, because nature is there to fulfill our needs. So we must take care of the nature. If we don't take care of the nature will also stop taking care of us, है ना? So this is the requirement कि you must take care of the nature.